अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू पीपल्स पॉडकास्ट पाकिस्तान। और आज हमारी 38 पॉडकास्ट है फॉलोइंग निकोमेकियन एथिक्स बाय एरिस्टोटल। लास्ट हमने बुक 3 को डिस्कस किया था और इस बुक 4 में हम डिस्कस करेंगे बुक 4 डिस्कस करेंगे निकोमेकियन एथिक्स की। बेसिकली इस बुक 4 में ज़्यादातर आप कह लो कि जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था गोल्डन मीन या फिर डॉक्टर आइन ऑफ मीन, उसको एक्सप्लेन करते हुए अरिस्टोटल ने डिफरेंट वर्च्यूज़ को डिस्कस किया है। हर चैप्टर में आपको डिफरेंट वर्च्यू मिलेगा कि उस वर्च्यू का एक्सट्रीम क्या है और उस वर्च्यू का डेफिसिट क्या है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू वी विल जस्ट जंप इनटू द चैप्टर 1। Abdullah, do you want to add anything before I start? ना जस्ट व्हाट यू सेड कि ये जो हमने लास्ट बुक 3 में बात की थी अबाउट करेज और टेम्परेंस, बट दे आर ओनली सम ऑफ द मैनी वर्च्यूज जिसके एरिस्टोटल बात करता है बुक 4 के अंदर, इस किताब के अंदर। उनकी सफिशिएंसी वाली स्टेट बताता है, डिफिशिएंसी वाली स्टेट बताता है, उनकी मीन बताता है। तो या लेट्स गेट ऑन टू द बुक। इतनी लंबी बुक नहीं है, इट्स जस्ट उसने काफ़ी वर्च्यूज बताई हैं, उनकी मेन स्टेट्स बताई हैं। इंडिया we'll move on to the fifth book after this. Yeah, no worries. Book number 4 starts with the virtue of spending money. बेसिकली यहाँ जो बुक 4 में जो चैप्टर 1 है, इट स्टार्ट्स विद यू कैन से फाइनेंशियल लिटरेसी है। बेसिकली एक तरह की छोटी सी उसने एक चैप्टर में डिस्कस किया है। उसने डिस्कस किया सखावत को। सखावत मीन्स जिसको उसने अपने वर्ड्स में कहा है लिबरलिटी, द राइट एटीट्यूड टूवर्ड्स स्पेंडिंग मनी। ही सेज कि द वर्चू पर्सन है, जो वर्चू पर्सन है वो हमेशा स्पेंड करता है अपना मनी टूवर्ड्स गुड कॉज and keeping in the absolute good or the supreme good in mind. उसका एक specific goal होता है। He doesn't spend less, he doesn't spend more, he just spends in moderation. अगर हम देखेंगे सखावत जो उसने की है, सखावत का जो डेफिशिट है या फिर जब सखावत का जब डेफिशिएंसी में चला जाता है, इट बिकम्स यू कैन से प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगैलिटी का हम उर्दू में जो सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं, एक्सेस जो है वो होगा प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगैलिटी मतलब शाह खर्ची, और उसका डेफिसिट जो है इट बिकम्स illiberately, so which is तंग दिली या फिर कंजूसी। तो he discusses prodigality, which is the excess giving, or each person who uses his money and he gives his money without thinking. He gives his money to anyone without thinking about the good or bad that would come from his giving. That person is not virtually intellectual, because वो जब भी अपना पैसा देता है he doesn't think about the end or the goal that his giving would achieve. और उसका जो ये जो उसकी शाह खर्ची का जो एलिमेंट है उसकी सोल के अंदर, या फिर उसका जो वर्च्यू का जो है, ये जो एक्सपेक्ट है, जिसका वर्च्यू बहुत एक्सेस में चला गया एंड इट बिकम्स अ वाइस, उसके पीछे एक रीज़न होता है। बिकॉज ही वांट्स टू, यू कैन से, he wants to he he कह सकते हो आपके, he wants to get praise by giving a lot. He doesn't really care if his giving is towards good or towards bad. उसकी जो giving है, it should just gain him some praise. और अगर एक इंसान बिल्कुल ही देना बंद कर दे, he would become a कंजूस। बेसिकली कंजूस इंसान है, वो हमेशा रिसीव करना चाहता है, he doesn't really want to give। और कंजूस आदमी जो है, अभी इसके बारे में आगे जाके डिटेल में डिस्कस करूँगा इसके बारे में कम्प्लीटली। मगर यस, कंजूस आदमी कभी भी किसी को कुछ भी नहीं देता, किसी से रिसीव तो कर लेगा, मगर ही वुड नॉट इवन स्पेंड ऑन द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर हिज लिविंग। जब कोई ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत की चीज़ पे पैसे खर्च नहीं करेगा, बिकॉज ही लव्स मनी, ही लव्स टू होर्ड थिंग्स। और जो तंग दिल इंसान है, इसके बारे में एरिस्टोटल ने ये कहा है कि जो प्रोडिगलिटी है, शाह खर्ची है, इट इज़ स्टिल अ बिट बेटर देन, यू कैन से, तंग दिली से फिर भी बेहतर है। बिकॉज प्रोडिगलिटी में जब आप मनी स्पेंड करते हो, यू डोंट रियली केयर अबाउट
what that money becomes, but you just want self praise. इसमें क्या होता है, इस process में you make some friends. It is good for social interaction when you start giving without thinking. मगर जो तंग दिल इंसान है उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती, बिकॉज ही डजंट रियली गिव, he doesn't even spend money when it's necessary, so उसका कोई दोस्त भी नहीं होता. And whenever he needs social support, there is no one to help him, because he's just a stingy person basically. That is why वो कहता है कि शाह खर्ची भी बुरी चीज़ है, तंग दिली भी बुरी चीज़ है, मगर शाह खर्ची थोड़ी सी बेहतर है तंग दिली से. इसके बारे में अब इसके बारे में आगे जाके वो बेसिकली यही एक्सप्लेन करता है कि जो वर्चुअस आदमी होगा, ही वुड ऑलवेज डू थिंग्स इन मॉडरेशन. और वो हमेशा जब भी पैसे स्पेंड करेगा, ही वुड थिंक अबाउट द फाइन एंड ऑफ हिज मनी, उसका मनी है वो कहाँ जा रहा है, हाउ इट हेल्प्स द कॉज, हाउ इट बिकम्स गुड, एंड हाउ हिज इंटेंशंस टूवर्ड्स गुड आर. तो ही वुड नेवर स्पेंड मनी विद बैड इंटेंशन. मगर जो बंदा है, जो शाह खर्च बंदा है, हिज मनी कुड गो टूवर्ड्स बैड इंटेंशंस, और he could spend money with bad intentions just for his self praise or some small gratitude. इसके बाद वो डिस्कस करता है कि जो शाह खर्ची की बेसिकली जो प्रोडिगलिटी की डेंजर्स क्या है. It could lead towards financial ruin. When you spend too much money, you can run out of money, and when this person runs out of money, he starts depending upon other individuals. And sometimes spending money in large quantities can finish your money, and then you start gaining money. You start thinking about gaining money from illegal means, because you just want to give and you just want money for your self praise. It can also harm your relationships, because जब आप अपने पोजेशंस और हर चीज़ बगैर सोचे समझे देना शुरू कर देते हो, इट कुड स्टार्ट affecting your relationships with people which are close to you, because when it is necessary to spend money, you won't have any money left. और ऐसा जो बंदा है, he is never able to plan about future, because he is just spending money for short term games basically. He's not thinking about the money in the long term. He's not thinking about the good or supreme good basically. This person can also be more motivated by lack of self control. ऐसे बंदे में सेल्फ कंट्रोल भी नहीं होता, बिकॉज ही कैन रियली कीप ऑन टू हिज मनी. और ये जो सेल्फ कंट्रोल वाला एलिमेंट है, ये फाइनेंशियल या फिर मनी के एक्सपेक्ट्स के अलावा उसकी लाइफ में दूसरे तरीक़ों से भी उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है. और उसके बाद ही डिस्कसेस कि कैसे, मतलब कि इलिबरलिटी या फिर आप कह लो तंग दिली, वो किस तरह सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है. इट्स मोर वर्स दैन प्रोडिगैलिटी. बिकॉज़ ये जो चीज़ है, ये ज़्यादातर मतलब कि वो कहता है कि जो प्रोडिगैलिटी है, इट कैन बी फिक्स्ड विद एक्सपीरियंस और ओल्ड एज. जब इंसान के तदब्बुर आता है, इंसान की उम्र बढ़ती है, शायद उसका जो शाह खर्ची वाला एलिमेंट है वो कंट्रोल में आ सकता है. व्हेन ही सीज़ कि उसने जिन लोगों के ऊपर या जिन कॉलेज के ऊपर पैसा खर्च किया है, इट लेड टूवर्ड्स डिज़ास्टर, और the people he used money on, they didn't really come to his help when he needed money. That could change his attitude towards money or his financial literacy. It could really change his financial you can say financial demography. मगर ये जो stinginess है बंदे के अंदर, it is deeply wired in a person's psychology. और ये इंसान की साइकोलॉजी का जो पार्ट है, इट कैंट इवन बी फिक्स्ड थ्रू ओल्ड एज. ज़रूरी नहीं है कि बंदा ज़्यादा एज में हो, मतलब कि ज़्यादा उसकी जब एज बढ़े तो वो कंजूसी छोड़ दे. जबकि प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जो कंजूस लोग होते हैं, वो एज के साथ साथ ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट होर्डिंग मोर एंड मोर एंड मोर. आई रिमेंबर सीइंग अ बीबीसी शो, जिसमें एक बंदा था, ही वुड गो इनटू द हाउसेस ऑफ पीपल हु यूज्ड टू होर्ड डिफरेंट थिंग्स, लाइक होर्डर्स के घर जाता था. और इट वाज अ वेरी वियर्ड शो कि आपको ऐसे-ऐसे लोग देखने को मिलते थे, लाइक they would seem like they are homeless or they are hobos, but they would be multi-millionaires, and their house would be full of things, unnecessary things, that they wouldn't really spend money on themselves on things that are necessary. मगर they would they would love materialistic things, and they would love hoarding them. और ऐसे जो लोग होते हैं, इनकी दो किस्में होती हैं.
एक तो किस्म के लोग होते हैं जो कि अपने पैसे की मतलब कि जो उनका राइटफुली अर्न मनी होता है उसको होल्ड करते हैं। और कुछ जो लोग होते हैं वो मतलब कि वो दे गो सो फार इन होल्डिंग और दे गो सो फार इन रिसीविंग कि दे डोंट रियली केयर इफ देयर मनी इज कमिंग फ्रॉम अप्रोप्रिएट केसेस फ्रॉम अप्रोप्रिएट सोर्सेज। ऐसे लोग होते हैं वो मतलब कि छोटे मोटे क्राइम्स कर लेते हैं, चोरी कर ली। मैं डकैत वगैरह की बात नहीं कर रहा, आई वुड डिस्कस दैट एज वेल। ये छोटे मोटे क्राइम्स कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, किसी को ठग लेंगे। और ये जो लोग होते हैं ये दे डोंट रियली केयर अबाउट देयर रेपुटेशन, दे जस्ट केयर अबाउट देयर स्मॉल टर्म फाइनेंशियल गेन्स। मगर जो मैं दूसरी किस्म के लोगों की बात कर रहा हूँ वो दे केयर अबाउट देयर मनी, राइट, दे लाइक टू सेव द मनी दैट दे राइटफुली अर्न। और लोग ज़्यादातर इन लोगों को ये जो मैं डिस्कस किया कि जो करप्ट लोग होते हैं, जो करप्ट सोर्सेज से भी पैसे गेन करते हैं, हमने इनके बीच में और उन लोगों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। जैसे कि जो लोग पूरे के पूरे शहरों को मतलब कि प्लंडर करते थे, किंग्स, और जिस तरह उनको मतलब वो दैट इज़ मोर यू कैन से that is more wicked or unjust part of their soul. It's not about hoarding, वो different चीज़ है। But ये जो stinginess है, it's basically you can say confined to an individual self, and it's you can say it's basically on small scale. तो हाँ, यही चैप्टर 1 यहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद चैप्टर 2 की बात क्या होती है। चैप्टर 2 में एरिस्टोटल डिस्कसेस मैग्निफिसेंस। और मैग्निफिसेंस का मतलब ये है, इट कैन बी ट्रांसलेटेड इन उर्दू एज अजमत। ठीक है, हाउ अ पर्सन कैन बिकम मैग्निफिसेंट, और अजीम कैसे बन सकता है। ही सेज कि अ पर्सन कैन बिकम मैग्निफिसेंस व्हेन ही स्पेंड्स large quantity of money, but he spends that money towards good cause. For example, there is a guy who has a lot of money, who is multi-millionaire, and he spends a lot of money on actual charitable organizations which do really exist, unlike Bill Gates, if you know what I mean. But yes, he's a person. He has the resources, and he uses that resources to donate big amount of money towards good cause. अब मैं जो मैग्निफिसेंट पर्सन है इसके लिए ज़रूरी नहीं है। अब नो वन नॉट अब हर एक ऑर्डिनरी बंदा मैग्निफिसेंट नहीं बन सकता। इस तरह का वर्चू नहीं ऑब्टेन कर सकता, बिकॉज दिस वर्चू कम्स विद द रिसोर्सेज। This virtue can be obtained by that person who has the resources to spend large money, or it is basically related to politics. And these kind of persons, they can also spend money on political political आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल कैंपेन्स में हमारे पैसे खर्च करना फॉर गुड कॉज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देना। और देयर मनी इज़ बेसिकली spent by their good judgment, और इट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एक्शन एज वेल। वो सोच समझ के अपने पैसे खर्च करते हैं, और उनका जो मेन गोल होता है, इट इज़ अबाउट benefiting their community basically. और yes, Abdullah, do you want to add anything over here? एरिस्टोटल जब बात करता है अबाउट लिबरलिटी या फिर अ पर्सन बीइंग लिबरल और इलिबरल, तो ही इज not talking about this individual's views या beliefs. He's talking about their stance or their approach towards handling money. और वो डायरेक्टली चैरिटी की भी बात नहीं कर रहा है, इवन दो वी नो कि चैरिटी इज इटसेल्फ अ वर्च्यू, इट इज अ गुड थिंग, यू शुड स्पेंड ऑन द पुअर एंड गिव टू चैरिटी ऑफ कोर्स। लेकिन वो बात कर रहा है अबाउट मनी इटसेल्फ। अगर आप इवन दो दैट वाज नॉट इन द ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट, ट्रांसलेशन हमें मिलती है कि पैसा या फिर आपकी जो भी करेंसी है, बट ही माइट हैव बीन टॉकिंग अबाउट योर बिलोंगिंग्स एज वेल, कि आपके पास जो है आप उसमें से उसको हैंडल किस तरह कर रहे हो। मनी की अगर आप उसको ले लो, आप यू जस्ट टेक इट एज मनी, तो if you're hoarding it, if you're squandering money, तो it contributes to being an illiberal person. बट इफ यू स्पेंडिंग द राइट अमाउंट ऑन द राइट थिंग्स, सो यूर अ लिबरल पर्सन। और अगर आप इसको एक लार्ज स्केल पे ले लो, सो दैट इज व्हाट ही कॉल्स एज मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस इज बेसिकली कि आप लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी स्पेंड कर रहे हो ऑन द राइट थिंग्स, बट इफ यू डूइंग इट ऑन द रॉन्ग थिंग्स,
इट माइट बी, आप कह सकते हो पेटिनेस, पेटिनेस नहीं, आप इसको कह सकते हो वल्गैरिटी वाला वाइस इसमें शामिल हो जाएगा, इफ यू स्पेंडिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन द रॉन्ग थिंग्स, एंड दैट्स व्हाट ही टॉक्स अबाउट स्पेंडिंग मनी और हैंडलिंग मनी, लिबरलिटी और मैग्निफिसेंस की बात करता है। उसके बाद वो मैग्नानिमिटी की बात करता है। मैग्नानिमिटी वो एक वर्च्यू बताता है कि अच्छा, इट इज़ a person who is receiving honors, for example the Nobel Prize, for example, या any honor for that matter, एक इंसान, एक ये क्वालिटी है मैग्नानिमिटी ऑफ अ पर्सन who knows himself or herself to be worthy of great honors। और एक इंसान जो मैग्नानिमस होगा, they will know कि अच्छा, we deserve this honor, and right, we're being appreciated by this on by this award या by this honor or whatever, but वो उसको इतना ज़्यादा रिगार्ड नहीं देंगे, they won't hold it to be very very important in their life, क्योंकि they already know their worth, they already know कि they are deserving of this honor, but this honor itself will not convince them that they are worthy, because they're already convinced that they're worthy, they're already convinced that they're deserving of this award। तो जो magnanimous individual है, he or she will not be swayed by great honors, they will not be swayed into holding as worthy those things which might convince that they're worthy, because they already have that thing established inside of them। और जो पर्सन मैग्नानिमस, any person can be liberal in terms of their belongings and in terms of their spending. But doesn't magnificence comes in uh, हर बंदा magnificent इस sense में नहीं हो सकता, because to be magnificent you have to have resources and you have to have that courage to spend in large sums. It can be the spending of your own, as you told, belongings. But the magnificence is a bigger term of liberality. What do you think? यार ऐसा आई है कि थिंक नहीं? सो एरिस्टोटल इन दिस सेंस वांटेड टू एस्टैब्लिश लिबरलिटी एज अ वर्च्यू, और उसने चैप्टर सॉरी बुक टू के अंदर नहीं, सॉरी चैप्टर टू के अंदर उसने लिबरलिटी को थोड़ा लार्ज स्केल पे लेकर मैग्निफिसेंस की बात कर दी। बट इवन दो ही सेज कि मैग्निफिसेंस इज अ वर्च्यू, he did not explicitly state it, क्योंकि अगर तो इफ दैट इज द केस कि मैग्निफिसेंस इज अ वर्च्यू, तो एक गरीब इंसान है या एक इंसान है जिसके पास इतना लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा नहीं है कि वो लार्ज गुड चीज़ों पे, जिस तरह पॉलिटिकल कंपेन्स होगी, इवन दो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड कॉज, बट अगर वो चलो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को भी दे रहा है, तो अगर उसके पास है ही नहीं वो पैसे, इफ दैट पर्सन डज नॉट हैव दोज रिसोर्सेज, तो मतलब ही कैन नॉट बी टोटली वर्चुअस, ही कैन नॉट बी मैग्निफिसेंट। तो इन दैट रिगार्ड आई थिंक सो कि एरिस्टोटल बात कर रहा है मैग्निफिसेंस की ओनली इन सो फार एज इट इज लार्जर मैनिफेस्टेशन ऑफ लिबरलिटी, और वो एक ही वर्च्यू के दो ब्रांचेस आप इसको कह सकते हो कि लिबरलिटी की ही ब्रांच है, इट इज नॉट अ डिफरेंट वर्च्यू ऑन इट्स ओन। तो आई थिंक सो Yes, दैट I think एक्सप्लेन्स so. इट। Yes, I think so. You are right, because explicitly उसने explicit तौर पे उसने ये नहीं कहा कि magnificence is a virtue, but he just when you magnify, yeah, when liberality को large term पे उसने large scale पे अगर हम discuss करेंगे तो it would become magnificence. But you are right कि उसने उसको एक virtue नहीं कहा. Yeah, I would totally agree with that. अच्छा, या यू राइट। इसके बाद ही टॉक्स अबाउट मैग्नानिमिटी लाइक आई सेड, और ये किसी भी तरह की आप कह सकते हो स्टेटस या फिर पावर या वेल्थ, इन सब चीज़ों को इनकैप्सुलेट करती है ये टर्म के, ये इंसान है, ही विल नॉट बी स्वेड बाय, ही और शी विल नॉट बी स्वेड बाय ग्रेट ऑनर्स या फिर बाय पावर, बाय वेल्थ और बाय स्टेटस इवन, क्योंकि दे ऑल नो कि दीज थिंग्स आर फ्लीटिंग, एंड उनकी जो अपनी सेल्फ स्टीम है, उनकी जो अपनी वर्थ है अपनी नज़रों के अंदर, इट विल नॉट बी स्वेड बाय दीज मटेरियल थिंग्स, बेशक वो कोई ऑनर हो जाए, कोई अवार्ड हो जाए, वेल्थ हो जाए, स्टेटस, पावर, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड ऑफ देयर ग्रेटनेस या फिर देयर वर्थ एंड देयर स्टेटस। तो वो कहता है कि एरिस्टोटल ये वर्ड्स यूज करता है कि जो दी मैग्नानिमस पर्सन है ना, देयर गेट इज मेजर्ड, देयर वॉइस इज डीप एंड देयर स्पीच इज अनहरीड। और वो एक ऐसी पिक्चर पेंट करता है कि दिस पर्सन इज ऑलरेडी वर्चुअस, क्योंकि वो एक पहले पहले मटेरियलिज्म के पहले लेवल से पहले ही बाहर हो गए हैं, क्योंकि दे देर नॉट पेइंग अटेंशन और पेइंग हीड टू दीज थिंग्स
which actually do not matter, like honors, wealth, power, status, all of these things, because this person is already convinced of their own worth. बेशक वो worth इतनी ज़्यादा भी ना हो अपनी नज़रों में, but they know who they are and they know their own capabilities. That is what amounts to magnanimity. इसके बाद वो कहता है कि इसके बीच में एक वर्चुअस मीन है। वो ये है कि आप ये जो इंसान है ना, दे विल नॉट स्ट्राइव फॉर ऑनर्स, लेकिन विद रिगार्ड टू ऑनर्स, मीन ये है कि यू इतना भी आपका एम्बिशन ना हो कि आप इंटायरली उस ऑनर या उस अवार्ड को के लिए एम कर रहे हो, और आपका इतना कम भी मिशन एम्बिशन ना हो कि आप किसी चीज़ के लिए एम ही नहीं कर रहे हो। तो द मैग्नानिमस पर्सन विल हैव एज देयर वर्चुअस मीन to better themselves, to be worthy in their own eyes, and that is rewarding in itself. ये थी मैग्नानिमिटी की बात। अब एंगर और पेशेंस की बात करता है वो आगे। डू यू वांट टू ऐड समथिंग नुमान, या शुड आई मूव ऑन? Abdullah, जब when you were discussing about ambitiousness या फिर unambitiousness और उनके बीच का एक मीन, तो Aristotle over here says कि to become or magnificent या फिर magnificent you should have the virtue of liberality in oneself. And but he says in order to become the person with great of mind and great of heart, one should have the virtue of ambitiousness. Like उसने कहा कि अगर if you want to become if you want to achieve magnanimity, you should have virtuous ambition in yourself. Ambition का मतलब to strive or to desire for something. Ambition वो होता है. He discusses two type of ambitious persons who are virtually ambitious and who are viciously ambitious. Virtuously जो ambition जिनके अंदर virtuous ambition होता है, they have those people are they have some kind of sense of civic duty, और उनका जो हर एक्शन होता है it is backed up by the idea of greater good for the society or for their community. मगर जो एक viciously ambitious person होता है, his motivations are driven by his own desires, और so that is why जब एक viciously ambitious person होगा, he would be unjust. He would be he would be unjust because he would want to achieve, or he would want to fulfill his desires. He would have strong ambition towards his desire, and he would want to fill them up. So, but over here, यहाँ वो कह रहा है कि he's trying to portray magnanimity as something good, but he's saying that in order to achieve magnanimity, you should have virtuous ambition, not the vicious ambition. मतलब कि जो magnanimity है, it has some kind of good in it in itself. Is this right, Abdullah, or no? यार एक वर्चुअस डिस्पोजिशन होनी चाहिए, क्योंकि जिससे हमने लिबरलिटी और इलिबरलिटी की बात की, जो इलिबरल पर्सन है हु स्क्वांडर्स और होर्ड्स देयर वेल्थ और देयर रिसोर्सेज, देयर बिलोंगिंग्स, देयर मनी, व्हाटएवर, तो दे आर टेकिंग द मीन्स एज एन एंड्स इन देमसेल्व्स। पैसा या बिलोंगिंग्स या वेल्थ इज ओनली एन एंड्स टू अ मीन्स, राइट? मीन्स टू एन एंड, राइट? कि आप पैसा यूज करते हो किसी ग्रेटर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, राइट? बट दिस इलिबरल पर्सन और पर्सन हु इज नॉट मैग्नानिमस, तो उनकी वर्चुअस डिस्पोजिशन नहीं होगी, क्योंकि वो पैसा ही होर्ड कर रहे हैं। जो मीन्स हैं उन्हीं को एंड समझ रहे हैं, और अपनी चीज़ जो हासिल करना चाह रहे हैं वो उनको नहीं पता हासिल क्या करना चाह रहे हैं, बिकॉज मनी इज ओनली अ मीन्स टू एन एंड। उस तरह एक मैग्नानिमस इंसान जो नहीं है, they will not have a virtuous disposition, because they will not have ambition for the right kinds of things. Like you said कि उनकी एक selfish motivation होगी behind everything they do. It will not strive for the greater good, but magnanimous person जो है उसके they will have a virtuous disposition, and they will strive for something that is outside their shell of being. अपने आप को साइड पे रख के वो कुछ greater good के बारे में सोचेंगे. So that Abdullah, is what he means by the virtuous I disposition. I was thinking like as you discussed कि उसने magnanimity को या फिर magnificence को as a virtue नहीं बताया. I would discuss that like you मैग्निफिसेंस called करो। it magnificence को, like you told कि उसने explicit तौर पे virtue नहीं कहा. I would discuss that, और मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा भी है खुद सोचने के बाद में, और वो भी बताऊंगा. Uh, जब हम ambitiousness को डिस्कस करें तो हम उस यहाँ एरिस्टोटल अनएम्बिशियसनेस को भी डिस्कस करता है, एंड ही सेज कि उसके भी दो एक्सट्रीम्स हैं.
जिस तरह की एक विशुअस एम्बिशियसनेस होती है, उस तरह एक विशुअस अनएम्बिशियसनेस भी होती है। जब एक बंदे के अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन होती है टू डू एनीथिंग, ही बिकम्स विशियसली अनएम्बिशियस। और जब एक बंदे के अंदर कंटेंटमेंट होती है, and he just focuses on himself, and he just focuses on himself on doing right things, he is virtuously unambitious, because वो अपनी सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहा, he just thinking about himself and just doing the good things with regards to his individual self or his contentment. तो अब्दुल्ला, आई वुड लाइक टू डिस्कस कि उसने क्यों नहीं कहा इसको एक वर्च्यू, क्यों नहीं कहा मैग्निफिसेंस को, अनएम्बिशियसनेस को, या वर्चुअस एम्बिशियसनेस को भी उसने वर्ड्स में वर्चुअसनेस नहीं कहा। बिकॉज अब्दुल्ला, एक वर्चुअस एम्बिशियस इंसान होगा, वर्चुअसली अनएम्बिशियस इंसान होगा, he would only he would only choose his own contentment, and he would, you can say, he would neglect the greater good for the society. So this person would be, I think so, would be a kind of selfish person, because he's only thinking about himself and he's neglecting his society. He's only thinking about his own contentment and his own goods. And इसी के हवाले से एक जो वर्चुअसली एम्बिशियस पर्सन होगा, ही इज़ नॉट गुड आइदर मेरे ख्याल में। because एक virtuously ambitious आदमी है, he chooses to do something, or he chooses to stand up against something that he thinks is unjust, but that thing could not be unjust, the thing he's standing up for, or the people around him, they don't really, you can say, they don't really stand up with him, or they don't really agree with him. But he is ambitious, and he's standing up for the wrong. So you could say that he's virtuously ambitious. व्हाट डू यू थिंक अब्दुल्ला इन दिस टर्म, कि मेरे ख्याल में जो एक बंदा जो है, जो वर्चुअसली अनएम्बिशियस है, वो है एक सेल्फिश आदमी, बिकॉज वो अपनी सोसाइटी को निगलेक्ट कर रहा है, ही इज़ ओनली थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ। और एक जो वर्चुअसली एम्बिशियस आदमी, वो भी एक तरह का गलत में, बिकॉज ही कुड गलत में हो सकता है, बिकॉज द थिंग ही स्टैंडिंग अप फॉर, द थिंग ही थिंक्स इज अनजस्ट, it could not be unjust, it could be just, or people would not agree with him, but he would continue because he's ambitious, and he's virtuous as well. What do you think, Abdullah? हम्म, यार आई थिंक सो। देखो, वर्च्यू में काफ़ी चीज़ें होती हैं, राइट? इट्स ट्रुथ, ऑनेस्टी, जस्टिस, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट अगर तो एक वर्चुअसली अनएम्बिशियस इंसान है, तो यू आर स्टेटिंग के देर सेल्फिश, राइट? बट द थिंग इज कि अगर तो एक इंसान है वर्चुअसली अनएम्बिशियस है एंड देर सेल्फिश, द थिंग इज के हाउ कुड दे बी वर्चुअस अगर तो उनको जस्टिस का नहीं पता, क्योंकि जस्टिस इन्वॉल्व्स देयर बीइंग some kind of a mean agreement between the interests of two people, okay, you doing right by them and they're doing right by you. It involves two parties, right? Justice, and that is how you are a virtuous person, right? That is how you are a virtuous person. So if that virtuously unambitious person is selfish, तो that's a contradiction, क्योंकि या तो वो virtuous नहीं है या वो selfish नहीं है। तो you could say कि एक unambitious person could be selfish, या फिर a virtuous unambitious person could not be selfish. Selfish and virtuous, I don't think so they go together, because I if you are think so. I virtuous think so. and Okay, hmm? यहाँ Aristotle might be wrong. I think so. Unambitiousness is totally in wrong. There is no mean to it. जिस तरह एरिस्टोटल ने उसको, जैसे कि हमने कुछ डिस्कस किया था कि कुछ वाइसेस ऐसे हैं कि जिनमें मीन अप्लाई नहीं करता। अब ये जो वर्चुअसली अनएम्बिशियस आदमी है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, हाउ कैन बी अ पर्सन virtuous? He could be virtuous if he thinks he is virtuous. He just follows his own contentment, but he ignores his society. Just जैसे कि एरिस्टोटल ने यहाँ डिस्क्राइब किया है, he just focuses on living his life virtuously or piously. But what do you think, Abdullah? क्या unambitiousness भी is one of those vices जो कि जिनके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ मीन नहीं लगता, या फिर गोल्डन मीन नहीं लगता? Yeah, the thing is, थिंग इज कि वीव गॉटन दिस रॉन्ग, यू एंड आई, क्योंकि इफ आई रिमेंबर करेक्टली एंड आई एम वेरी श्योर आई डू, ये उसने बात की है चैप्टर 2 के, सॉरी चैप्टर 3 के शुरू में, जब वो बात कर रहा है मैग्नानिमिटी की। और मैग्नानिमिटी की वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है विद रिगार्ड टू ऑनर्स। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसको एल्बर्ट कैम्यू कह लो,
उसको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, फॉर फॉर हिज फिलोसॉफिकल वर्क्स। अब वो बात कर रहा है कि यू गेट ऑनर्स इन सोसाइटी, आपको लोग प्रेज देते हैं और आपको पब्लिक अप्रिसिएशन के लिए अवार्ड्स मिलते हैं, वट एवर। एक वर्चुअस इंसान है, उसके लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए इन ऑनर्स की? वो कहता है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी इन ऑनर्स के लिए, तो आप अपनी सेल्फ वर्थ भूल रहे हो। आपके लिए, आपकी आइज़ में ये चीज़ें ज़्यादा वर्ती हैं देन बीइंग कंटेंट विद योर ओन सेल्फ। लेकिन अगर आप टोटली एम्बिशन लैक कर रहे हो ना, ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज स्मॉल ऑनर्स, दीज ऑनर्स, कि आपके लिए मैटर ही नहीं करती हैं ऑनर्स, तो So काइंड ऑफ he's वो भी talking एक about, बायस है। तो वही she's वो talking एम्बिशन about बात कर रहे हैं विद रिगार्ड टू in, ऑनर्स इन सोसाइटी। in terms of external goods. He's talking about ambitiousness in या terms of external goods. या Yes, then that would तो be fine. या अगर वो इंटायरली एम्बिशन की ऑन इट्स ओन बात कर रहा होता, तो देन इट वुड बी अ कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज वर्च्यू एंड सेल्फिश डू नॉट गो टुगेदर। फिर हमारी बात होल्ड करती है उस केस में। थैंक्स मार्ट, ये काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो गया और मेरी भी कंफ्यूजन बीच में से ख़त्म हो गई। तो फॉर अ यस सेकंड आई यू, थॉट एज वेल कि एम्बिशन की उसने अलग से बात की, बट देन आई हाँ रिमेंबर्ड मगर उसने एम्बिशन की सिर्फ मैग्नानिमिटी की कंडक्ट में बात की है। उसने, हाँ उसने सिर्फ एक्सटर्नल गुड्स मतलब कि ऑनर्स के लिहाज से उसने एम्बिशियसनेस और अनएम्बिशियसनेस को की बात की है। यस अब्दुल्ला, इट्स नॉट रियली ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा एम्बिशियस हो इन टर्म्स ऑफ ऑनर्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल गुड। कुछ लोग एम्बिशियस नहीं भी होना पसंद करते, कुछ लोग तारीखी में या फिर आप कह लो कि they want to do good but they don't really care about those external goods such as high honors या फिर praises. So this kind of हम्म person could be unambitious, virtuously unambitious. So, magar yes, the person who is virtuously ambitious, he would. What do you think? He would not care about the honors as well. He would only care about the good for the society. Yes. So हम्म, both of these ये बात individuals, मुझे they would. वैसे समझ नहीं आई है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ एरिस्टोटल बात करते हैं। हाँ, व्हाट यू सेइंग? मैं कह रहा हूँ कि जो वर्चुअसली अनएम्बिशियस पर्सन है और जो और अन जो विशियसली सॉरी virtuously unambitious or virtuously ambitious, both of these persons they don't really care about praises or honorable things. What do you think? But he's talking about ambition only with regard to small honors. Ambition not on its own. He's talking about ambition with regards to honors or in society. जिस तरह मैंने नोबेल प्राइज की एग्जांपल दी, एम्बिशन की सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। एम्बिशन ऑन इट्स ओन इज नॉट अ वर्च्यू। एम्बिशन आपका हो सकता है चोरी करने का भी, एम्बिशन आपका हो सकता है किताबें लिखने का भी। तो एम्बिशन ऑन इट्स ओन इज नाइदर अ वाइस नॉर अ वर्च्यू। एम्बिशन की सिर्फ बात कर रहा है फॉर एग्जांपल विद कॉन्टेक्स्ट विद रिगार्ड टू ऑनर्स, प्रेजेस या पब्लिक डिस्प्लेज ऑफ अप्रिसिएशन, उस रिगार्ड में बात कर रहा है। तो लाइक यहाँ लेकिन आई वो डोंट गेट दिस वैसे, क्योंकि जो ये वो जब बात यहाँ करता है कि जो एक्सट्रीम एम्बिशियस एम्बिशन भी नेचर, गलत है। हुँ? सॉरी, तू बोल ले। नहीं नहीं वो मुझे क्योंकि थोड़ा सा लैग आ रहा है आवाज़ का इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, मगर यार यस, मेरे सिग्नल कम आ रहा है। नो वरीज। तो मगर बोले यहाँ जो एम्बिशियसनेस और अनएम्बिशियसनेस है, यू आर राइट कि दे आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल गुड्स, बट यस we would discuss that after the podcast, but I think so we must get on. We have already spent half an यार hour. बट आई डोंट गेट दिस वैसे, क्योंकि एम्बिशन की जहाँ तक उसने बात की है ना, ही सेज कि अगर तो आपकी नज़रों में नोबेल प्राइज़ है व्हाटएवर, किसी भी तरह का अवार्ड अगर आपकी नज़रों में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो भी गलत है, और नहीं मैटर करता तब भी गलत है। तो आपके लिए मैटर करना चाहिए, एक मेन डिस्पोज़िशन है इसके बीच में। आई डोंट गेट दैट पार्ट। एक इंसान जो वर्चुअस है उसके लिए मैटर ही नहीं करता। लाइक मैनी फिलोसोफर्स फॉर एग्जांपल हैव डिस्कार्डेड द नोबेल प्राइज़, उनको मिलने लगा तो उन्होंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं है। तो आई वही तो मैं थिंक सो कह रहा दैट्स हूँ, वर्चुअस। How बिल्कुल can बिल्कुल Aristotle go against that? I don't get that part. वही मैं बात कह रहा हूँ कि वर्चुअस इंसान भी केयर नहीं करेगा, वर्चुअसली एम्बिशियस आदमी केयर भी नहीं करेगा और वर्चुअसली अनएम्बिशियस आदमी भी केयर नहीं करेगा, तो वो थोड़ी सी I कंफ्यूजिंग, थोड़ा don't सी। get कि Aristotle ने इसका मीन क्यों निकाला है। I don't get that part. पर हाँ, क्योंकि थोड़ा-सा बंदे को फ़ील होता है कि लाइक ही इज़ ट्राइंग टू फिट हिज़ डॉक्ट्रिन ऑफ मीन इन Golden एवरीथिंग। mean. हर चीज़ में Hmm. घुसाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? तो Hmm. वही जाके हम आगे भी डिस्कस करते हैं। हिज राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स एंगर, Aristotle focuses on the virtue of patience, or he calls it the the part which is concerned with the endurance of soul. Impatient आदमी होता है, he has the lack
लैक ऑफ इंडोरेंस, वो कभी भी किसी चीज़ को, मतलब कभी किसी डिफ़िकल्टी को एंड्योर करने की हिम्मत नहीं रखता। उसके अंदर एक इम्पेशेंट पार्ट होता है। ही जस्ट वांट टू परस्यू थिंग्स व्हिच आर स्मॉल, व्हिच अर्न हिम स्मॉल ग्रेटिफिकेशंस, और उसका कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता। और ये जो एक किस्म का वॉइस है, इम्पेशेंस का जो वॉइस है, it is it is mostly accompanied by anger and frustration. Then he talks about insensibility. He says ki insensibility on the other side is characterized by a person's person's indifference to differentiate between pain and discomfort, pain or discomfort, like उसको फर्क ही नहीं पड़ता वो pain या फिर discomfort की तरफ, and his tendency is to just give up easily to avoid pain. Or this kind of vice is mostly accompanied by lack of motivation or lack of ambitiousness. तो यस, द वर्च्यू ऑफ पेशेंस वही है कि जब जिस बंदे में एक पेशेंस का एलिमेंट होता है, ही इंडोर्स पेन, ही इंडोर्स डिफिकल्टी एंड ही इंडोर्स डिस्कम्फर्ट बिकॉज he has long term goals, and he has the ability to endure those pains because he wants to stay on his course and he wants to work towards his long term goals. एक वर्चू इंसान होता है, ही इज ऑल वर्चुअस। ये वर्चुअस इंसान, इसके अंदर ये वर्चू ज़रूर होगा पेशेंस का, बिकॉज पेशेंस का जो वर्चू, इट इज़ ऑल्सो ड्रिवन बाय रीजन, एंड इट्स ऑलवेज एम टूवर्ड्स अचीविंग अ ग्रेटर गुड rather than, you can say, achieving small term goals या gratifications, or just to avoid discomfort, or you can say just to avoid any difficulty. तो यस, वो कहते हैं कि पेशेंस इज ऑल्सो पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन अचीविंग मॉरल वर्च्यूज़। अगर आपने मॉरल वर्च्यूज़ थ्रू हैबिचुएशन के ज़रिए आपने अपने अंदर ग्रो करने, यू मस्ट हैव द वर्च्यू ऑफ पेशेंस। एंड ही सेज कि वर्च्यू और करेज इस तरह से एक आपस में एक दूसरे से क्लोजली रिलेट करते हैं, बिकॉज these both virtues do have common in them, because they both deal with, or they both involve the facing of difficulty and discomfort. Dullah, do you want to add anything over here? आई थिंक सो। ये जो पेशेंस एज फार एज इट इज़ अ वर्च्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन कल्टिवेटिंग ऑल द अदर वर्च्यूज़, क्योंकि हमें पता है कि यार आप वर्च्यू, जिस तरह हमने बुक वन में बात की थी या बुक टू में बात की थी, कि वर्च्यू सिर्फ आप कल्टिवेट करते हो थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एंड हैबिचुएशन, राइट? तो वो एक बड़ा स्लो और लेंथी प्रोसेस होता है कि आप वर्च्यूज़ कल्टीवेट कर रहे हो, बिहेवियर से अपने आप का पार्ट बना रहे हो उन चीज़ों को। यू कांट लर्न देम बाय थियरी अलोन, बट यू हैव टू प्रैक्टिकली कल्टिवेट दोज थिंग्स इन योरसेल्फ। तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। इफ़ यू डोंट हैव द पेशेंस टू कल्टिवेट द राइट वर्च्यूज़, तो यू विल नेवर कल्टिवेट द राइट वर्च्यूज़। तो बिफोर you learn or attain the other virtues, you have to first attain the virtue of patience, जिसकी वजह से वो बात करता है कि it is closely related with all the other virtues। एंगर की जहाँ तक बात है, यू राइट, ही सेज कि पेशेंस जो है इट इज़ अ वर्च्यू, बट इन सम सिचुएशंस एंगर माइट बी द वर्च्यू, इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन सिचुएशंस। इसमें उसने बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में नहीं बयान किया कि अच्छा, क्योंकि इट डिफर्स फ्रॉम सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस। इन सम सिचुएशंस इट माइट बी राइट to exhibit anger, it might some in some situations it might be right to not exhibit anger। तो उसलिए इसने ये नहीं कहा कि अच्छा पेशेंस इज द ओनली आंसर, इन इट डिफर्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, बट जनरली द रूल ऑफ थंब ही सेज इज कि पेशेंस इज ऑलवेज द वर्च्यू व्हिच यू नीड टू बी लुकिंग फॉर व्हेन यू आर एंग्री। यस अब्दुल्ला, ये बिल्कुल भी सही बात आपने डिस्कस की। मैं तो उसको इतना सा भूल ही गया था अपनी डिस्कस करते हुए, कि यस, यू शुड डिस्प्ले एंगर। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर व्हेन यू आर इन एन अथॉरिटेटिव पोजीशन, यू शुड डिस्प्ले एंगर व्हेन नेसेसरीली नीडेड। बिकॉज अगर आप हर चीज़ में पेशेंस को एक्वायर करोगे, दे समवन माइट प्रिज्यूम इट एज योर वीकनेस। So yes, you have to show your anger towards unjust things. अगर आप कुछ देख रहे हो, आपके इर्द गिर्द कोई अनजस्ट एक्ट हो रहा है, यू हैव टू शो योर एंगर, और यू हैव टू शो योर डिस्कम्फर्ट
just to show that you don't really tolerate these things and you stand for that. You are not to show, but it shows your character, it shows your disposition, like you stand towards injustice or you stand against to injustice. Abdullah, उसके बाद, yes, he talks about, Aristotle discusses the virtue of truthfulness या फिर honesty. He says कि बहुत honesty is a mean between boastfulness या exaggeration, and it also uh, so exaggeration and self uh, deprecation. Exaggeration क्या होता है कि when someone claims things about himself that he hasn't done. मैं तुझे कहूँ अब्दुल्ला कि यार I made $1 million last night, और अल्लाह- और मैंने शिफ्ट किया वो सिर्फ $250 कमाया हो. You would say like you would know that yeah man, this guy is boosting है ये बंदा, like ये ज़्यादातर I think so exaggeration is accompanied by one's foolishness या one's immaturity, because he thinks that he could get away with boosting, or he could get away without people knowing that he's lying. On the other self, बिल्कुल ही अपनी achievements को डाउन कर दो, just to look just to look a lot modest. इसके बारे में अभी मैं एक रिसेंटली एक लेक्चर सुन रहा था कि ये जो आजकल लोगों ने आजकल मतलब कि आजकल नहीं, काफ़ी ज़माने से लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ है कि लोग समझते हैं कि हमने इस्लाम में क्या है कि वी हैव टू टेक दीन एंड दुनिया टुगेदर। मगर कुछ लोग होते हैं वो, जैसे कि अगर आप जाओ दरबारों पे जाओ, वो नाच रहे होते हैं या बिल्कुल गंदे मंदे फेर रहे होते हैं। दे शो दैट दे डोंट रियली हैव एनीथिंग, दे आर डिस्कनेक्टेड विद द वर्ल्ड जस्ट टू शो देयर हम्बलनेस। और सब कुछ लोग होते हैं दैट दे डोंट रियली शो हाउ मच दे हैव, लाइक वो अपना पैसा भी ज़ाहिर नहीं करते, अपना पैसा भी खर्च नहीं करते, जस्ट इन टर्म्स टू लुक हम्बल और जस्ट इन टर्म्स टू लुक पायस बेसिकली। और इसी तरीके से मैं पढ़ा था कि तिरमिजी में एक हदीस थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया गंदे कपड़ों में और गंदे हाल में, तो नबी करीम ने उससे पूछा कि क्या तेरे पास कुछ था नहीं कि तू अपना मुंह चेहरा साफ कर लेता या अपने कपड़े साफ कर लेता? तो उस बंदे ने कहा नहीं, मेरे पास था। तो नबी करीम ने पूछा कि तुम्हारे पास माल है या दौलत है? उसने फिर बताया कि हाँ मेरे पास इस फलां फलां ऊँट हैं, मेरे पास बागात हैं, ये मतलब कि वो बंदा अमीर था मगर वो गंदे हाल में फिरता था जस्ट टू लुक पायस। तो नबी करीम ने उसको सख्ती से मना किया कि ऐसा बंदे को नहीं करना चाहिए कि बंदा इस तरह, because if God has given you money or if you have achieved some things, you have to be you don't have to exaggerate your achievements, but you have to just truthfully acknowledge your achievements, or you just have to truthfully uh, you can suspend you just have to truthfully basically accept your uh, you can say achievements without exaggerating या फिर without extreme downing. What do you think अब्दुल्ला? क्योंकि आजकल काफ़ी लोगों ने ना इस चीज़ को कंफ्यूज कर लिया है कि दे टेक थिंग्स टू एक्सट्रीम, दे बिल्कुल ही दुनिया की तरफ चले जाते हैं, बिल्कुल ही दे इन टर्म्स ऑफ लुकिंग पायस दे मेक देमसेल्फ डर्टी, या फिर बिल्कुल ही अपने आप को पायस दिखाने के लिए दे डोंट रियली शो दैट दे इवन दैट गॉड गिव देम सम मनी टू क्लीन अप देमसेल्व्स. व्हाट डू यू थिंक? यार ये मसला है बिकॉज वी हैव इक्वेटेड बीइंग हम्बल विद बीइंग पुअर पुअर नहीं आप कह सकते विद नॉट हैविंग एक्सेसिव वेल्थ या हम्म. बिलोंगिंग्स लाइक आई डोंट थिंक सो कि आप एक बाइनरी है दीन और दुनिया की आपने एक चूज करना है सिर्फ हजरत दाऊद की आपको दुआ बड़ी मशहूर है कि वो मांगते थे कि इस दुनिया के लिए कि मुझे पैसा मिले मुझे ऊंट मिले मुझे बागात मिले मुझे दुनिया की दुआएं वो करते थे तो ही वॉज अ प्रॉफिट तो वाई डिडंट ही आस्क फॉर द आखिरत ओनली ही आस्क्ड फॉर द वेल्थ एंड उन्होंने ऐसी बिलोंगिंग टू द बादशाहत वर्ल्ड एज वेल मांगी अल्लाह ताला से कि उन्होंने कहा कि ऐसी बादशाहत हो कि जो मेरे बाद किसी के पास भी ना हो। तो उनको अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाहत दी कि उनके जिन भी उनकी बात सुनते थे, वो जानवर भी उनकी बात सुनते थे, उनको अल्लाह ने खूबसूरत आवाज़ दी, लाइक ही वाज़ अ रियली बिग किंग। और उन जैसी बादशाहत मेरे ख्याल में अब उनकी दुआ कबूल की अल्लाह ताला ने, उसके बाद कोई भी ऐसा बंदा नहीं आएगा जिसके बाद उन जैसी बादशाहत होगी इन टर्म्स ऑफ मटीरियल वेल्थ और इन टर्म्स ऑफ पावर एज़ वेल। तो ये वही ना अब्दुल्ला, आजकल लोग ज़्यादातर अगर आप चले जाओ मज़ारों पे, लोग अपने आप को पायस शो करने के लिए, मैंने खुद देखा है काफ़ी लोगों को जो दे लाइक गॉड हैव गिवन देम रिसोर्सेज एंड अल्लाह ताला ने उनको पैसा भी दिया, बट दे डोंट रियली स्पेंड मनी ऑन देमसेल्व्स जस्ट टू लुक पुअर,
और वो समझते हैं कि बुरा, हम पुअर लगने से वी वुड अचीव सम काइंड ऑफ ट्रांसेंडेंस, और वी वुड सीम पायस इन फ्रंट ऑफ पीपल, मतलब कि लोग हमें कहेंगे यार देखो कितना अच्छा आदमी के पास पैसा है मगर किस तरह के हाल में फिरता है, कितना ये ही हाउ मच ही इज रिलीजियसली ओरिएंटेड, जबकि ये इट्स वेरी रॉन्ग। इसका मतलब ये कि आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को ठुकरा रहे हो, लाइक यू आर जस्ट शोइंग गॉड कि यू डोंट नीड एनीथिंग, ये यू डोंट इवन नीड हाँ, हिज इट्स रॉन्ग इन द केस कि आपके पास है और आप खर्च नहीं कर रहे हो और आप दिख जो हो वैसे नहीं रहे हो, लेकिन इट्स आई थिंक सो इट्स राइट, या फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है वो एग्जांपल कि आपके पास है और आपने वो सब दे दिया, फिर आप फकीरी के अंदर जाते हो। वो एक सूफिज्म या स्पिरिचुअलिटी या ट्रांसेंडेंस का बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है, जो वो आई तो डोंट थिंक सो नेक्स्ट लेवल तुम्हें है। समझ आएगी या मुझे आएगी। वो बिल्कुल डिफरेंट केस है। मतलब मैं अगर आपके I'm पास not है और आप खर्च नहीं कर रहे हो, तो I'm not दैट्स talking रॉन्ग। about वही ना वही आप I'm not talking about those people who have passed, like मैं तो ये समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो सूफीज जो थे उनको लोगों ने काफ़ी रॉन्गली उनको जज किया, और उसकी वजह से आज हमारे माशरे में काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं। वी कुड मेक अ पॉडकास्ट ऑन दैट सेपरेटली, क्योंकि जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान में हो रही हैं, कि आई वाज वाचिंग वाचिंग अ वीडियो जिसमें से अंदरूनी सिंध के अंदर एक मज़ार है, उसके ऊपर लोग अपनी शलवारें लटका के जाते हैं, और वो समझते हैं भाई ये पीर बाबा शलवार वाली सरकार, और वहाँ से लोग आते अपनी शलवार को दरख्त के साथ लटका के चले जाते हैं दुआ मांग के। और उस जगह की एक शर्त है कि आप साथ में अपने साथ कोई दूसरी शलवार भी लेके नहीं आ सकते, जो आपने पहनी हुई आपने वही उतार दी है। और लोग ये काम कर आई रहे होप हैं। दैट्स नॉट ट्रू। नो, आई विल सेंड यू द वीडियो आफ्टर दिस पॉडकास्ट, ये वाकई में हो रहा है। और बंदा कहता है यार कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, मतलब कि इस हद तक लोग ना, अल्लाह माफ करे, वुड यू थिंक कि अगर कोई नेक बंदा था जिसको अल्लाह ताला का वेट करता था, या जो एक ट्रांसेंडेंस के लेवल पे अचीव करके चला गया था, लेकिन अगर ये अब्दुल्ला मैंने भी रिसेंटली बुल्ले शाह की, वारिस शाह वगैरह की शेर व शायरी पढ़ी, उनकी शेर व शायरी इज ऑल अबाउट गॉड, इट्स गॉड ओरिएंटेड। सो व्हाई द पीपल हु फॉलो देम आर ओरिएंटेड अराउंड दोज पर्सनैलिटीज, वो उनसे यार क्यों ये अभी मांग रहे हमारी हैं, इससे वो पहले खुदा भी से क्यों बात आ नहीं रही मांग थी रहे। कि हमारी हम सबकी ना एक डैडी ओरिएंटेशन है कि हम सब ने जिंदगी में एक डैडी ढूंढना है, एक आइडिया ढूंढना है। उस आइडियल से हमने ऑब्सेस्ड हो जाना है, और हमने फॉर एग्जांपल नीट्शे सेड ना कि देयर वाज ओनली वन क्रिश्चियन एंड ही डाइड ऑन द क्रॉस। ही सेड दैट क्योंकि एक ही क्राइस्ट था, एक ही क्रिश्चियन था, ही डाइड ऑन द क्रॉस, जीसस क्राइस्ट। बिकॉज उस उनका जो मैसेज था, पीपल डिड नॉट फॉलो दैट, पीपल मेड हिम गॉड, पीपल मेड हिम द डैडी। आई एम सॉरी टू यूज दैट लैंग्वेज बट आई होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, कि people instead of following his message they started following him, they became obsessed with his personality। उसी तरह इट इज आई थिंक सो इट्स प्योर ब्लैक एंड वाइट शिर्क, क्योंकि जो मैसेज ये पर्सनालिटीज हैं जो बहुत पास्ट की आई हैं ऑफ स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज, सूफी पर्सनालिटीज, we instead of grasping onto their message we grasp onto their personalities, और हम उनसे उनके दरबारों में जाके माफिया मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं, एंड दैट्स ऑल ऑफ दैट आई डोंट गेट दैट। बल्कि आई डू, आई गेट दैट टू द एक्सटेंट कि आई एम टोटली अगेंस्ट इट, आई डू नॉट सपोर्ट इट, एंड आई it's just कि the one thing that your religion has told you not to do, you're doing that thing and you're not even realizing it, shirk। अब्दुल्ला, और तो मैंने ये अगर आप देखो इंसानों ने जब भी अपने खुदा बनाए, they have made them very, like उनके बुत बनाए, they want to see themselves, they want to see their god in something, basically they want to perceive their god in any sense, in some sense। अल्लाह ताला तो हमारी हमारी जो परसेप्शन से बाहर है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, इन कायनातों सातों आसमानों से भी बेतहाशा बड़ी है, और ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं है अल्लाह ताला के सामने बेशक। मगर मसला है कि इंसान की नेचर है कि इंसान ही जस्ट वांट्स टू, जो मेरे ख्याल में ना इंसान हैज़ हैज़ रॉन्गफुली ऑलवेज ह्यूमंस ने क्या किया कि खुदा गॉड को डिफरेंट चीज़ों के साथ मनसूख कर दिया है। और इसकी हमें एग्जांपल इससे मिलती है कि जिस तरह कि आप डिफरेंट रिलीजन्स हैं पूरी दुनिया में, some people have associated God with sun, some have associated him with moon, because that is something they can see and they can concentrate on। तो मेरे ख्याल में शायद ये जो इंसान के अंदर एक वो है, ये जो चीज़ है, इट लीड्स देम टूवर्ड्स शिर्क। एंड वी शुड रिस्पेक्ट गॉड इन टर्म्स कि खुदा इतना बड़ा है कि वी कैन नॉट परसीव हिम।
और खुदा ने खुद मतलब कि हम क्यों ऐसी बातें, हम शिट वाली बातें क्यों सोचें, क्योंकि हम अल्लाह ताला की जो अज़मत है उसके हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मगर येस इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट अब्दुल्ला, यार इसके बारे थिंग में इज हम एक्सपीडियंट है ना, हुँ, एक्सपीडियंट है, कन्वीनियंट है। क्योंकि जब आप बुत कन्वीनियंट बना रहे होते हो, आप कन्वीनियंस आपके लिए येस कन्वीनियंट बिल्कुल। है, क्योंकि आपका जो टेस्ट है ना, आपका टेस्ट है ही ऑफ द अनसीन। तो आपके लिए आसान है कि आप उस बुत को देखो और आप उसको मानो, बजाय उसके कि आपने जो चीज़ देख ही नहीं सकते, जिसको सुन ही नहीं सकते, आप उसको मानो। तभी तो आपके लिए ज़्यादा आसान है कि आप कहते हो जीसस क्राइस्ट वॉज गॉड, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली थिंकिंग कि हाउ कुड अ पर्सन हु इज नॉट ऑल नोइंग नॉट इवन नो कि जो वो फल मांग रहे हैं अपनी माँ से, वो फल का सीजन ही अभी नहीं है। दैट वाज अ स्टोरी, राइट? ही वाज आस्किंग फॉर एन एप्पल फ्रॉम मरियम, एंड शी टोल्ड हिम कि नो, उसका सीजन नहीं है। इफ ही वाज गॉड, हाउ ही वाज ही नॉट ऑल नोइंग? ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर मैन टू बिलीव कि ये बुत खुदा है, या जीसस क्राइस्ट खुदा है, या चांद खुदा है, या सूरज खुदा है, बिकॉज ही कैन सी दोज थिंग्स। बट वो सारा पर्पस नेगेट कर देता है। पर्पस है ही बिल्कुल। टेस्ट ऑफ द अनसीन का। और इस चीज़ की हमें एग्जांपल इस बात से ही मिलती है अब्दुल्ला कि अगर तुम्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बताओ कि जब वो फ़िरौन को सारी फ़ौज को हराने के बाद जब दरिया मिल गया और सारी फ़ौज फ़िरौन की बह गई। उसके बाद जब वो अपने जब बनी इसराइल के साथ जा रहे थे तो बनी इसराइल ने एक कौम को देखा जो बहुत कंसंट्रेशन से एक बुत की पूजा कर रही थी, ठीक है? दैट वाज़ देयर गॉड। और उनकी कंसंट्रेशन इतनी ज़बरदस्त थी कि बनी इसराइल के लोगों ने कहा हज़रत हज़रत मूसा से कि जिस तरह ये लोग इतनी कंसंट्रेशन से और इतनी ज़बरदस्त तरीके से इबादत कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू मेक अस नाउज़ बिल्लाह अ बुत ऑफ योर गॉड एज़ वेल सो वी कैन वर्शिप हिम। सो उसके बाद फिर आप जाते हो, आपको मालूम होता है कि उन्होंने वाक़ई में सोने का ब बछड़ा बना दिया, जब वो कुछ दिनों के लिए गए पहाड़ी के ऊपर। तो अब्दुल्ला, ये इससे हमें मालूम होता है कि यस वी वांट टू, इफ वी जस्ट सर्च फॉर कन्वीनियंस, वी जस्ट वांट टू वी इवन सर्च फॉर कन्वीनियंस इन द व्हेन वी आर टेकिंग द व्हेन वी आर डिस्कसिंग और वी आर थिंकिंग अबाउट गॉड। और ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है अब्दुल्ला। अल्लाह ताला ने क्या सिंपल सी बात की है यार कि 5 नमाज़ें पढ़ो, अच्छे काम करो, किसी को दिल ना दुखाओ, मगर कुछ लोगों के लिए वो करना मुश्किल है, मगर उनके लिए दरबारों पे जाके घुंघरू पहन के नाचना आसान है। हम्म। Do you understand what I'm saying? And I आई have डू, आई met डू। some people, जो कि नमाज़ी हैं, सब कुछ हैं, they are so spiritually awake, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जो नमाज़ भी नहीं पढ़ते बट दे थिंक दैट दे आर वेरी स्पिरिचुअली अवेक, बिकॉज़ वो डिफरेंट कव्वालियाँ सुनते हैं या वो डिफरेंट किस्म की चीज़ों पे बिलीव करते हैं। तो अब्दुल्ला, इट आई थिंक सो इट ऑल इट वुड ऑल बी फिक्स्ड जब हम अल्लाह ताला को वाक़ई में अल्लाह ताला को माने कि अल्लाह ताला की ज़ात जितनी बड़ी है, हम उतना बड़ा अल्लाह को परसीव करें। और हम इस बात हम वाक़ई में वी शुड नॉट सर्च फॉर आवर कन्वीनियंस बट वी शुड डू व्हाट्स राइट। अब्दुल्ला, इसके बाद कुछ डिस्कस करना है अब बुक नंबर, उसके बाद जो लास्ट चैप्टर था उसमें एरिस्टोटल ने ये डिस्कस किया है अबाउट अबाउट द मीन इन टर्म्स ऑफ ह्यूमर, ठीक है? वर्च्यू ऑफ गुड ह्यूमर। उसने क्या है, जो गुड ह्यूमर का जो एक्सेस होता है, इट बिकम्स बफूनरी। उसका जो उसकी जो वॉइस या फिर उसका जो डेफिशिएंट है, इट बिकम्स यू कैन से ह्यूमरलेसनेस, कि इंसान के अंदर ह्यूमर का जो एलिमेंट है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिकॉज ही कैंट रियली इंटरेक्ट विद पीपल और ही हैज़ इनएबिलिटी टू मेक गुड ह्यूमरस कमेंट्स। इट्स जस्ट कॉमन सेंस, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है इसमें। तो he says कि virtue of wittiness or virtue of humor is closely related with building social interactions and relationships, and it can help you promote positive interactions। और बफूनरी की जहाँ तक बात है, तो बफूनरी में बंदा अक्सर आप कह लो कि इनअप्रोप्रिएट या ऑफेंसिव जोक्स कर देता है, किसी को इंसल्ट कर देता है। You would have even met some individuals, I have met some individuals जो शोखे हो जाते हैं मजाक करते हुए, and they start making inappropriate jokes जो कि which are not very good, which hurt other people. So yes, he is talking about the golden mean of sense of humor. Do you want to add anything, Abdullah, over here? हम्म, यार उसने यही कहा है कि विट या फिर ह्यूमर जो है, जो इंसान लैक करता है उसको इन कॉन्वर्सेशन, तो वो बड़ा एक अनइंटरेस्टिंग या बोरिंग टाइप एक इंडिविजुअल लगता है इन कॉन्वर्सेशन। एंड अ पर्सन हु एग्जिबिट्स दैट इन एक्सेस, तो वो काइंड ऑफ आप कहते हो
बफूनरी की तरफ चले जाता है। तो या ही इन दिस बुक ओवरव्यूड सेवरल वाइसेस, सॉरी वर्च्यूज, और उन वर्च्यूज की उसने एक्सेस स्टेट बताई, उसकी डेफिशिएंट स्टेट बताई, और उसकी मीन स्टेट बताई। अगेन गोल्डन मीन वाला सारा चक्कर है यहाँ पे। तो इवन दो दिस बुक वाज वेरी शॉर्ट, बुक 4, लेकिन इसकी 1 घंटे की एपिसोड बन गई है, तो विल नॉट बी एडिंग द बुक 5th इन दिस एपिसोड। But yes, this was a good episode. In the next one, we'll be doing the episode on book 5 of the Nicomachean Ethics. थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला। और मैं हम लोग यहीं अपनी पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। और 39 पॉडकास्ट वी वुड कम विद बुक नंबर 5। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।